Okay. So when we say talk about the web development in general, there are actually the two terms. Okay, one is the web design, and other one is the web development. So because you have done BCS, and I just want to know, because there are many times I waste time for little things, right? Um, I want to know firstly how much you know things. Then maybe we can skip a part, or maybe we can go further, or maybe I will start from the scratch and start going like I do right from the very beginning. This is my teaching style. I go from very scratch and then go up. This is what I've been doing all the time because I have a long teaching career. I have been teaching like that. But I just want to know um, from you guys, what do you come up with the web design versus web development? What do you understand by web design versus web development? Let's talk a bit. If anybody can talk a little bit on it, he or she can raise her hand, his or her. Raise your hand, or straightway talk a bit and just open up. Just let's start a discussion about web design and development, right? So before, I must say one thing, that you wanna build a bridge, for example. If you want to build a bridge, you want to say, for example, do some engineering phenomena, maybe, then you can't learn just few tools in that and you say, okay, I'm done. For example, if you want to build a bridge, you learn some kind of language, or some in our development parlance we call it language, or in the engineering formula, you know how to put up the those bricks and cement and concretes, but you don't know how to pave the bridge, so it's gonna fall. So you may need to engineering phenomena to pave it, rather than just building it. First, you need a complete engineering mechanics to deal with the bridges mechanics, that when how much load it will bear, how things will go. Then anybody can you can hire a Bihari maybe, who can put up a cement and all, right? But that will not. But if we say that Bihari mason go and build a bridge of its own without the engineering knowledge, that is gonna fail for sure. That's why the maximum times the people go into the web design or development without understanding the full logic. They have no idea what are they doing, and they think we are going on a right track. But then when they go waste a lot of time, then they feel, oh, we shouldn't have been here. We shouldn't go this way, and we should have been learning this, and we should have been learning that, right? So we need to understand the underlying technology. The first step should be to understand the underlying technology. For example, if we are learning Photoshop, where are we learning Photoshop? Where are we at in the track of, say, what's called the full stack web developer? Sometimes we call them a full stack web developer. If for example you want to become, we will discuss that. What is that? But the question is, you have to understand in your career path, because this subject can be your career track. Got it? You can excel on it and learn more, and you can make this as your career. So because some subjects are which you can make your career, right? So this is the one of them. Unlock meeting. So this is one of them, right? So we need to lay a solid foundation where we understand firstly all the jargon. That's why I said the jargon buster here. So we should be having all those jargons in our mind, and I should have a full image of where things fit in which place, right? So the first thing which comes in mind is the difference between web design versus web development. And I want you guys to talk a bit on it because you have done BCAs and all. And I think you have some idea of this. Okay, over to you guys. Here, the Danish Fayaz is saying web design is about front end, but if you see about the development, right? Web development, if you leave the design on one side and if you see the development, then it has three things. It is the front end,
development, okay, back end development, and also the database technology. There's three things: database technology. We'll discuss that, right? So I want clear today. Should have a clear idea what is the difference between web design and what's web development. But this is really nice. I really appreciate Danish Fayaz. You are starting up this thing, and you have actually talked right. This is not wrong, okay? But technically, I'm telling different thing. But whatever you have said is right. Maybe other guys may add up. Have you never come across this question: web design versus web development? Okay. Let me about the Arshin because A से मुझे Arshin ही नजर आती हैं रोज. So Arshin बोली कि सर मुझे ही पकड़ता है. Arshin, do you know something? I mean, open up your mic and just talk a bit. If you say simply say I don't know, that will be a really nice answer. Uh, have you any idea about the web design versus web development? अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. How are you, dear? फाइन सर। सर जो वेब डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें, हाँ थोड़ा सा हाँ. मुझे ऐसे लगता है कि हम इसमें कोई वेबसाइट लेते हैं और उसमें फंक्शनिंग यूजिंग मतलब उसमें हम बहुत सारे HTML CSS जावा वगैरह वो उसमें इस्तेमाल करते हैं Okay. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। design? वेब डिज़ाइन सीधी वेबसाइट बनाना Mm-hmm. Good. Thank you. Thank you. That means you have lots of doubts in it. Okay. So we will today do one thing. We will remove all these doubts. And if we have learned one thing, that's great. Because yesterday's class I was not satisfied. मुझे बाद में फील हो जैसे मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं. I don't know what. जैसे टाइम में बरकत ही नहीं हुई. लेकिन आज हम थोड़ा सा कुछ सीखते हैं, ठीक है ना? एवरी क्लास शुड बी समथिंग, वी शुड लर्न समथिंग. लेकिन कल का मुझे जैसे लगा कि जैसे कुछ सिखाया ही नहीं मैंने, मैं कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ था. तो इंशाल्लाह आज थोड़ा सा इसका सेटिस्फेक्शन लिखते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए, पूरे डाउट्स निकले, ठीक है? ओके. So let me talk about it now. So when we start talk of web design, I will give you one example firstly. For example, you have to build a car. Okay, we want to build a car. Now, this building a car has a lot of things in mind. Keep this example in mind and then go for the analogy, and we'll talk about the slides. In the meantime, you also can read also the slide and listen to me what I'm saying. I'm saying if you want to build a car, now the car has many things to build. What is the first thing? The first thing which is there is the outer look, the outer look, the aesthetics. Okay, and there's also one more thing, the modern trend. Keep these things in mind because they're relevant to our web design. Then UI design versus uh, real-time design versus a lot of things we have, okay, or interface design or UX design. Okay, we have a lot of things in. We will do the same analogy here. Then but first understand the car. We have a car and we want to color it, and we have to first we don't have to only color it, we just have to first see what is the trend in the market. Okay, what is the best, we have to do the data analytics, that what people like. We can't just go on and randomly color the car and then tomorrow people don't like it, even though it's a beautiful car, even though its engine is nice, it's perfect, its fuel consumption, everything is all right, but its color is not good. When the customer comes, he first see the color, right? He just go when the customer comes to a site, he just first see the interface, he just first see the design. So, like the car, there will be some engineering people who are specialists in design only, who know what color I should do. There will be one people who will be designing, who will be actually coloring that, who will be designing that. And there will be set of people, the same set of people, different set of people who will do market analysis, who will see what is the liking of the people, even the curves of the car, even the shape of the car. They will do the data analytics to see which design I should build. My these headlights should be this way. My bonnet should be this way. A lot of things we can change. A lot of tweaking and a lot of things can be done as per the market analysis, as per the we see how the market goes and all. So there will be some kind of designers who will be doing that, and there will be some set of designers actually who are making their hands dirty, who are actually designing that.
Okay, and then there will be also in this will be the like comforts, seat comfort, gear comfort, uh, that कहाँ पे बटन है इसका, बेटर कौन कहाँ पे रहेगा बटन. These are engineering phenomena जहाँ पे लोग एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, ट्रायल करेंगे, फिर देखेंगे नहीं भाई यहाँ पे बटन नहीं होना चाहिए, यहाँ बेटर रहेगा, अगर यहाँ गियर है ऐसे नहीं, थोड़ा इधर आना चाहिए, इसका सीट का कंफर्ट ये होनी चाहिए. फिर दूसरे सेट ऑफ पीपल होंगे जो कि एक्चुअल इंजन पे काम करेंगे, जो गियर का अंदर, जो गियर का एक तो होता है गियर ऊपर से उसकी लुक कैसी है, उसका फील कैसा है, उसका कुशन कैसा है, और दूसरा होता है गियर का अंदर मैकेनिक्स कैसा है. That is totally different. There will be totally different engineering people, guys, who are designing the gear mechanics, who are designing the wheel mechanics, who are designing the engine, who are actually making that car run, who are making that fuel efficient. So that is totally different thing, right? So today we will have a clear idea what we are talking about. So when we say about web design, so if you see the slide, so it involves everything which is dealing with the aesthetics, right? Sorry, I should get this aesthetics, okay, and usability of website. What does the usability of website mean? It's very important, you know. There are people who think, okay, I will become full stack developer, but in a company, when you go to some company jobs, there you are either a designer or you are a developer, you are either a front end developer or you are a back end developer, you are not everything, right? Because the technology is so huge, uh, that we can't just grasp everything, we have to concentrate on one thing. So today you will also have some career track that where you should go, but we should first understand properly what is the web design and web development, and what technologies we are using, what languages we are using, and what should we do to either design or develop, and what is firstly the difference we come to know. But first we say web design and development, the totally different things, the totally different kind of people that working on totally different platforms, even different languages, different job roles, everything is different. Okay, so you may say, for example, your site is a very shiny and all, but it's not that usable. It's not that user friendly. I need to. It should have been, I put up a button. It should give me the all the comforts of going on a site. Sometimes it becomes very tough, and मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इधर जा रहा है, इसको क्लिक कर रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया. तो वो इसकी यूजिबिलिटी नहीं है, हालांकि चकाचौंध बड़ी जबरदस्त है. तो चकाचौंध खाली नहीं चाहिए, एस्थेटिक ही नहीं चाहिए, बल्कि यूजिबिलिटी भी चाहिए. इसलिए दो काइंड के डिजाइनर्स, दो काइंड के होंगे हमारे पास, मैं बताऊंगा आपको. तो इससे आपको पता चलता है, जैसे मैंने कहा, कार का एक तो हो गया जो लुक करेगा, लेकिन दूसरा डेटा एनालिटिक्स करेगा, जो देखेगा कि ट्रेंड क्या है, हमारी ट्रेंड क्या है कार की इस वक्त, डिजाइन एंड ऑल की. तो वही है कि हमारी, एक बंदा आएगा वो दिखेगा कि मेरे जो वेबसाइट है, लोग कैसी लुक को फील करते हैं, और कैसी कंफर्ट लेवल्स कैसी होनी चाहिए, कि मतलब जैसे आप डिजाइन कर रहे हो, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे पिक्चर्स होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो जिससे लोगों की आसानी होती है, लोग फील बेटर इन दिस वेबसाइट, फॉर एग्जांपल दे प्रेफर दिस वेबसाइट देन दैट वेबसाइट, सो दे डू डेटा एनालिटिक्स, so they are also the designers. And that's why we have what's called the UI versus UX designers. Okay, user interface and user experience. So that's a designer or two, user interface and user experience. User experience do the data analytics, they see how people are doing their sites, and which is getting famous and which is getting more popular. And then are you, is my voice clear? Because it's showing me some network glitches. Can you hear me? Can you guys hear me? Hello? Okay, you are hearing me. Okay, good. So that's the designers are of two types, okay? UI and UX. UI guys will just go and build the website, and whether buttons and there's pictures and there's whatever they are, they try to make it very colorful using photoshops, using Skype, Sketch, using Illustrator, using photoshops, Adobe packages and lots more, and making very beautiful interface. But then we need to know what is the trend in the market, how sites are evolving, and how sites are looking, their functionality, their overall user friendliness.
and they are about the UX. That's called UX, user experience developers, designers. They do that. So mainly the web designer makes your website look good. They focus on the style or feel, style and feel भी होनी चाहिए ना, खाली style ही नहीं होना चाहिए. Okay, तो designers are those who transform an idea a story. एक आप पहले एक idea लोगे और अपने piece of paper पे, that's called wire framing. Okay, wire framing अक्सर हम करते हैं जब आपकी web designing and development करनी होती है. Then we have the that thing, that paper thing, we come into the being, we start developing that, and this is the job of your web designer. So layout कैसी है website की, and so and lots of things, and overall building the interface, यानी कि site का interface. यानी कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने साइट बनाई, उसके ऊपर बटन्स बनाए, ठीक है, ये बटन सबमिट बटन, ये बटन वो बटन. बल्कि बटन क्या करता है, बटन को क्लिक करने पे क्या करता है, आई डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, मैं बटन बना रहा हूँ, मैं इसकी लुक कर रहा हूँ, इसको फील, इसको अलाइन कर रहा हूँ परफेक्ट. ठीक, ये मेरा काम, अगर मैं डिजाइनर हूँ. लेकिन मेरा ही काम ये नहीं है कि आप बटन फंक्शनैलिटी क्या कर रहा है, आई डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक, सो कंपनी के अंदर जब आप कल जाओगे, यू आर नॉट this often we call full stack developers who are web designers as well as developers. They are designers as well as developers, but they companies में ऐसा नहीं होता, वहां स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं जिनको खाली डिजाइन में स्पेशलिटी है. वो फोटोशॉप्स वगैरह, इलस्ट्रेटर, जितने भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं उनमें एक्सपर्ट हैं, और उसके बाद वो बना रहा है जबरदस्त फिनिशिंग प्रोडक्ट. अब फंक्शनैलिटी क्या कर रहा है, आई डोंट वरी अबाउट दैट, राइट, एज अ डिजाइनर. वो तो फिर दूसरा किसका, डेवलपर का काम है. और उसमें भी दो, फ्रंट एंड बैक एंड. ठीक, तो डिजाइनर क्या करेगा काम, डिजाइनर का काम ये होगा कि भैया रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा, रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा, व्हाट डज दैट मीन, यू नो दैट, यानी कि जो मेरा टेबल है, फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टूडेंट का फॉर्म बनाना है. अब स्टूडेंट के फॉर्म अगर मैं बनाऊंगा, मुझे पता होना चाहिए कि भाई मेरे स्टूडेंट के डेटा में क्या क्या है, आई शुड नो दैट. मेरे, हालांकि मुझे डेटा के ऊपर कुछ नहीं करना, मुझे इवन बटन के क्लिक पे क्या हो रहा है वो भी नहीं करना, लेकिन मुझे बनाना है ना जगह, जैसे नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल नेम के लिए जो बनाना है मुझे टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे लेबल रखनी है, या ड्रॉप डाउन्स मेरे पास हैं, कौन से कोर्सेज आपके हैं, अब मैं कोर्स लिख रहा हूँ, सो इसमें कौन कौन सा कोर्स ड्रॉप डाउन आएगा यहाँ पे बॉक्स एंड सो ऑन. सो रेड, ये बटन मुझे बनाने हैं, इट विल बी एज पर द डेटाबेस जो मुझे कल स्टोर करना है. सो आई हैव, बीइंग अ वेब डिजाइनर, आई शुड हैव द क्लियर आइडिया ऑफ द, कि मेरे पास क्या क्या चाहिए. कि अगर मैं स्टूडेंट का ये वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें, जैसे एलएमएस आपका है, जहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले रहे हैं हम, उसमें उसका नेम ले रहे हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें ले रहे हैं, उसी का पीछे बाद में टेबल बनेगा, वो वेब डेवलपर आपका बनाएगा. लेकिन डिजाइनर को तो पता होनी चाहिए ना कि मुझे क्या बनाना है. सो ही विल बी द गाय हु एक्चुअली बिल्ड द इंटरफेस, राइट. सो जहाँ पे जो फिर वहां पे जो फील्ड्स होंगे, उन्हीं का कल टेबल बनेगा. ठीक है ना. सो दैट इज व्हाई our designer should be creating the relational database schemas. The schema means overall idea of what is, he's not building the database, he's not actually creating the tables and sqls and all, he's not doing nothing, but he has to build as per those tables. जो कल टेबल बनेगा जिसका, लेकिन उसका इंटरफेस तो यहाँ से बनेगा ना, जैसे मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है, that will go into that table then tomorrow, right, but I should know the overall schema कि मेरे पास स्टूडेंट के पास ये चीजें लेनी है, मैं इसका एनरोलमेंट लेना है, इसका जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, वो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स, इसका डेटा टाइप भी पता होना चाहिए मेरा. ठीक है ना. सर प्लीज वेब डिजाइन रिपीट कीजिए, अभी वेब डिजाइन ही चल रहा है, आपको आएगा समझ, डोंट वरी अर्शीन, ये वेब डिजाइन ही चल रहा है ना सारा. मैं इसको थोड़ा सा फिर बाद में वापस आ जाऊंगा, अभी मैं कंप्लीट नहीं किया मैंने वेब डिजाइन क्या होता है. तो ये सारा डिजाइन ही चल रहा है ना, कि ये वेब डिजाइनर काम करेगा, वो इंटरफेस बनाएगा. ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक न्यू स्लाइड करके, कि मेरे पास एक जैसे मैं एक स्टूडेंट फॉर्म बना रहा हूँ, ये नेम है, फिर इसमें टेक्स्ट बॉक्स, फिर एज, क्लास वगैरह, और कोर्स मेरा एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है जिसमें निकल रहा है कोर्स, उधर से ही मुझे है. तो कल जो मैं टेबल बनाऊंगा फिर इसका, वो इसी का बनेगा टेबल.
इसी के हिसाब से यहाँ पे नेम होगा वगैरह 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 जो भी चीजें होंगी. सो दैट इज व्हाई वी से दैट योर दिस वेब डिजाइनर हैज टू बिल्ड द डेटाबेस स्कीमा. डज इट मेक सेंस? तो उसको वेब लेआउट बनाना है, तो पेज बनाना है उसका उसका लेआउट बनाना है उसका, सो विजुअल डिजाइन बनाना है. ओके. तो प्रोटोटाइपिंग डिजाइन बनाना है, यानी कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल हम दिखा रहे हैं कि भाई हम कैसे अपनी साइट बनाएंगे. प्रोटोटाइपिंग में क्या करते हैं हम, हमको पहले साइट बनाते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर यूजर को दिखाते हैं भाई ऐसी है, तेरे को लुक फील कलर ठीक सब अच्छा है, बटन यहाँ पे, वो कहता है नहीं मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ भाई, मेरे को बटन इधर से नहीं इधर से चाहिए क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ. ठीक. या मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए, इसको थोड़ा राउंड बना दो, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दो, ये पिक्चर यहाँ पे कर दो. सो उसमें भी वो डिजाइन बनाते हैं कौन सा, वेब डिजाइनर ही बनाएगा. तो जो भी क्लाइंट इसको बताएगा, जो क्लाइंट के साथ कोई डिस्कशन होगा कि भाई हमको ऐसे 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 चाहिए चीजें, वो सारी वो अपने पेज पे बनाता जाएगा. So it's all about aesthetics. It's all about creating those look and feel and aesthetics of the web page. It could be a single page, it could be multiple pages. ठीक है, ये सारा काम किसका है, वेब डिजाइनर का. नाउ एक होता है ग्राफिक्स डिजाइनर और एक होता है वेब डिजाइनर. ठीक है ना. जैसे ये आप पिक्चर देख लें, ये वाला बंदा जो है, दिस वन इज वेब डिजाइनर एंड दिस इज अ ग्राफिक डिजाइनर, एंड प्रोबब्ली दिस इज अ गर्ल ग्राफिक डिजाइनर. क्योंकि because but we can interchange, not a problem. But graphic designers are mainly what they are, like a makeup artist. And this one, if you see, he has got a keyboard, he has got, you could see the brackets of the um, HTML braces and all coding, and then mechanics, and then he's gonna have some coding also. So he's not just designing just like a makeup artist using some tools where we don't code. Okay, there are a lot of graphics tools, multimedia tools which you have learned from the BCAs, which we can use to design. But this guy, web designer, is ये है हमारा कोडिंग वाले भाई साहब. You should remember that. So ये कोडिंग वाले भाई साहब है. ठीक. जो ग्राफिक डिजाइनर हमारे पास है, दे डोंट हैव टू यूज कोड, दे ओनली जस्ट design things using the maybe the Maya, you are using some uh, Photoshop Illustrator, Photoshops, and lots of multimedia softwares. But this guy not only design using those softwares, but also he should be knowing like HTML and CSS. He should be knowing that because he has कोई बटन बनाना है ना, इसका वेब पेज बनाना है, उसमें वो बटन्स बनाने हैं, रेडियो बटन बनाना है, उसके वो सारे चीजें बनानी है, यहाँ पे पिक्चर्स रखने हैं, यहाँ पे वीडियो रखना है, यहाँ पे वो रखने हैं, lot of things. You have to design a page, right? He should be knowing HTML and CSS, right? At least he should be knowing these two. He has to know HTML and CSS. Without this, ये कोडिंग वाले भाई साहब तो फिर कुछ भी नहीं है. लेकिन जो ग्राफिक डिजाइनर है, वो उनको तो कुछ चाहिए नहीं होगा, because they just use Flash and all. So you should remember the graphic designer and web designer, they are totally different guys. So जो आपका जो graphic designer है, they are just they are non computer science. Anybody can just learn these multimedia tools and just start designing. But web designer, you have to know the coding. So you got to know the Flash, JavaScript, and CSS. Not necessarily JavaScript. If you are a designer, we should not be using the JavaScript. We have to use the HTML. Okay, because if you talk about JavaScript, then you got to be the developer, not the designer. So designer, uh, जो फ्रंट एंड, क्योंकि हमारे पास डेवलपर में भी फ्रंट एंड डेवलपर है, उसको भी HTML वो ओवरलैप करता है इसके साथ. बट जो आपका वेब डिजाइनर होगा, he only has to work about the look and feel, no functionality, no functionality. अर्शीन, यानी कि मैं एक पेज बना रहा हूँ, उस पे तमाम चीजें बना रहा हूँ, बट आई डोंट वरी अबाउट हाउ दे वर्क. That is the designer. Now the developer actually has to plug everything in and he has to see कि मेरा काम कैसा करता है, ये जो ना मेरे पेजेस है. ठीक है ना. Okay. So
what tools and skills you need for a web designer. So if you want to become a web designer, so what tools and what skills you need. Okay, so question is what tools and skills you need being a web designer. Firstly, you need some Adobe Creative Suites like Photoshop, Illustrator, and there are lots and lots of design softwares that you can use, multimedia softwares. There is no limit on that. And then you can be a graphic design tools. You got to be logo design because maximum times पसीना निकलता है लोगो बनाने में कंपनी का. ठीक है ना. So logo designers कुछ लोग सिर्फ उनका कैरियर होता है लोगो बनाना. They are specialist in making logo. Do you understand? हमको लगता है कि शायद ये उनका कैरियर होता है. They have a career of only thing logo. बस कंपनीज आती हैं लोगो बनाए और वो बहुत चार्ज करते हैं उनका लोगो बनाने में. Because logo design itself is a art, it's a science also in it, and it's a huge field. Then layout and format. No, layout is very important क्योंकि मुझे मेरी साइट जो है ना वो मोबाइल पे भी चलने वाली है, बड़े स्क्रीन पे चलने वाली है, तो पैन होना चाहिए बराबर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा बड़े स्क्रीन पे चलाया मैंने ये साइट तो वो उसमें साइड में अंधेरा आ गया, ब्लैक आ गया. इट शुड पैन टू द स्क्रीन. मेरे मोबाइल में गिरा तो अब उसमें वर्ड ही नहीं दिख रहे, वो बहुत बड़ा है तो फिट ही नहीं हो रहा. इसमें किसमें मोबाइल डिवाइस में, तो मोबाइल डिवाइस तो छोटा है. अब मैं इस छोटे डिवाइस में मैं इसमें देख रहा हूँ अरे भाई ये तो फिट ही नहीं हो रहा, तो बर्ड बड़ा चल रहा है तो वो श्रिंक होना चाहिए इसके अंदर. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट दोज थिंग्स आल्सो बीइंग ए designers. So we need to place a call to the action buttons, right? But then functionality वो हमारा काम नहीं है. Branding, wireframes. Wireframes is a term, but I think I have put up on the end a question so that you also have to work with me. Just go ahead and just tell me what is wireframe. Okay, then markups, then storyboards. These things are what we do before actual design. We actually do these things. We do markups, we do storyboards, we we just go for wireframes, and we do a lot of things. Then color palettes, typography, and creative graphic skills. We need all those things, and then we can use the other design softwares. What I said here are like Sketch. We have Dreamweaver. We even can use the artificial intelligence to design our things. So a designer overall is worried about the actual look and feel and aesthetics of your web page. This web page can be single page or we can have a total different pages, right? Do you understand? Now then I said web designers are having specialization in either the UX design or the UI. Okay, now UX designers they need to keep you just you want to be your site should be popular. You can't just don't want to leave your user, they shouldn't be bored by your site because you have done proper data analytics, you have designed your website using all kinds of what you have seen, which sites are popular, what trends they are using. So you have done all those research, and then you are building your site as per those parameters, right? So your people should enjoy your website. So you can Google it. I just put up here the Google 6 best designed websites 2020. You come to know what the UX design. When you just Google, write in a Google 6 best designed websites of 2020. So two works I gave you, two assignments for now. First is what is the wireframe is? What's the wireframing or wireframes? Okay, and second is 6 best designed websites 2020. Just give it a click and just see how they are designed. Okay, if you are serious to make it a career and all, then you will be doing all those things. So second thing is the user interface design. Okay, it differs from the UX. It's just to design. Okay, because I told you if I want to build a car, now one set of people is trying to see how the people, what color people like, what shapes people like, how the headlights should be, what should be the comfort zone, how should be the button, what should be the buttons and all. Same is with our website. So one set of people will see how our
what colors we should use, what combinations we should use, color combination we should use. That depends on the what is the trend in the market. What people, sometimes people like this color. Say for example, one time I used only gray and all, just gray. I didn't like anything other than the gray, and then I came with the blue. Then my mood changed. I said, oh, it's blue, and I never used red. Okay, um, never use it as I say it's horrendous. Yellow, red is horrendous. But today I see people are wearing red, yellow goggles, and they like it. Trend has changed it. The trend has changed it. Okay, so that means we have to see the trend. What is the, because otherwise, if you don't go with the trend, you are gonna doom. Like Nokia phone, they didn't go with the Android and all, and they are doomed. Otherwise, Nokia was the best. So you have to go with the trend. That's important. Now, that's UX guys' job, designer's job, and UI guys, they just go and do your job, build the site. That's it. What the UX designers are doing, you just know that, and UI just go on and build your site. But no functionality. Keep that in mind. We're not yet to functionality. We're just making the dead site. We are just making a dead picture. We're just making a picture of a site, not what its functionality is. Because if I click a submit button, you should go to the database and submit your whole record, which is not designer's job, right? Now then there is one concept called visual designer, which means guys who are both UX as well as UI designer, who take both the crafts together, that they are called visual designers. So I said UI designers, UX, user experience, user interface, and then there are guys, visual designers, they master both of these. They are master of all web design trades. Okay, now comes the question of web development. Now I will ask for Arshin, have you understood what is the designer? In fact, it will become more clear when we talk about the development. But have you got a little idea about the web design? Arshin, I'm talking to you. Okay, that's great. एक्चुअली मैंने चाय भी आधी पी है, क्योंकि हम फजर के बाद हमारा आजकल हो गया, हम फुटबॉल खेलते थे बिकॉज कोरोना एंड ऑल, वी स्विच टू साइकिलिंग, एंड देयर वहाँ प्रोफेशनल साइकिलिस्ट मिल रहे हैं और वो हमें कम से कम 60 to 80 किलोमीटर सुबह साइकिलिंग कराते हैं, और मैं तकरीबन 8:30 बजे वापस आता हूँ वहाँ से। तो अदरवाइज मुझे आज प्लान था 9 बजे करना, लेकिन हुआ नहीं पॉसिबल, यू हैव टू बाथ एंड ऑल। नाउ वी हैव व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, व्हाट्स इट? ओके, ओके, have you done breakfast? Go. What is web development? Now, development, when you talk about development, it's those guys who build the engines in a car, who build the gear mechanics, who build the actual thing. Okay, so this is what development is all about. So they turn the design into a live website, because I said the website you're building, the designer is building a website, it's dead, it's doing no functionality, it has no functionality, it is just a dead, आपने बटन्स बनाए लेकिन वो भाई बटन कुछ करते नहीं है, वो क्लिक हो रहा है लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। डिजाइनर का काम उतना ही है, डिजाइनर कहता है उसके बाद आपका काम, मेरा काम लुक एंड फील, एस्थेटिक्स। ओके, बट आई एम नॉट जस्ट अ मेकअप डिजाइनर, आई एम अ कोडर आल्सो, कोडिंग वाले भाई साहब जो मैंने आपसे कहा, ठीक है ना? तो आई एम आल्सो दैट, बट then that we our site should do something, and it can do in a two ways. Either it is going to have a server, it is talking with the server, or my site is standalone, it doesn't worry about the server. So then that's called client side. So we have client side and we have server side. Okay, for example, I'm building my site, and that is just a site, and it does some work, it also does some work, but it's not having its data on the server, then it will be the client side only. But usually we have your LMS, for example, your LMS is having a client side where which you can see, okay, and then the data is stored, for example, lectures and whatever they are uploading that. I was discussing with one of my friends, he's in chemistry there in Islamic college. I told him, what the guys you're teaching? You're teaching nothing. He said we are uploading some
audios and some PowerPoint files without explanation. I said, is that called teaching? They say, I don't know. They are saying you're computer science guys, you know better than us, so we are actually handicapped in that. But this is what they are teaching there. They just upload things and all. So where is that upload? That upload goes in a server. So then we have what is called as the front end developers and the back end developers. But both of these guys actually make your website work. Okay. Now, for example, I have a shop. I have a shop, and what I want to do is what I want to do is किसी को पता नहीं शॉप कहाँ है और उसमें क्या प्रोडक्ट्स हैं, पता नहीं किसी को। लेकिन मैं कोई शॉपिंग कार्ट नहीं बना रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पब्लिसिटी बढ़े, मैं एक साइट बनाऊँ, वेबसाइट बनाऊँ, जिसपे मेरी शॉप का फ़ोटो लगे, मेरा भी अच्छा सा फ़ोटो लगे, बड़ा कोट लगा के, और मेरे प्रोडक्ट्स थोड़े-से साइड में आ जाएँ, बड़े चमक-चमक से, और उनके नाम वगैरह आ जाए, और कुछ थोड़े-से वो गिफ्ट्स वगैरह जो ना एडवर्टाइज़मेंट के लिए व्हाटएवर, वो चीज़ें आ जाएँ। लेकिन मुझे ये नहीं वहाँ पे कुछ है कि मतलब बटन है, फिर वो कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, फिर वो स्टोर करना है, फिर वो सर्व कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं है। ओनली दिखाने की चीज़ें हैं। एड्रेस है, वहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर है एंड ऑल दैट, और ज़्यादा से ज़्यादा वो टेलीफ़ोन पे क्लिक करेगा तो रिंग हो जाएगी वगैरह, या ईमेल पे क्लिक करेगा तो व्हाटएवर। लेकिन मेरा कोई डेटा स्टोर नहीं हो रहा, मेरा कोई काम नहीं हो रहा वहाँ पे। तो डेवलपर का जो है वहाँ पे काम नहीं है। वहाँ किसका काम है? वेब डिज़ाइनर का। ये काम किसका है? वेब डिज़ाइनर का। वो डिज़ाइन करेगा, बेहतरीन साइट बनाएगा, फ़ोटोशॉप में अंदर उसके कलर कॉम्बिनेशंस, लेआउट, पैरामीटर सारे सेट करेगा, पिक्चर्स रखेगा, बड़ी अच्छी उसमें एडिटिंग करके वो फ़ोटोशॉप का एक्सपर्ट होगा, इलस्ट्रेटर में जाके, ठीक है? एंड अदर या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करके और एचटीएमएल और सीएसएस को स्टाइल-वाटाइल मार के उसको ये वो बना देगा। ठीक है ना? तो यहाँ सिर्फ डिजाइनर का काम है। दिस इज डिजाइनर। वेब डिजाइनर ये क्या करेगा? डेवलपर का कोई काम नहीं। ठीक है ना? अब मैं देख रहा हूँ भाई, जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ बेचता हूँ, एबीसी प्रोडक्ट वटेवर। अब मैं देख रहा हूँ यार, मार्केट ट्रेंड है आजकल, तो सारे ऑनलाइन खरीद रहे हैं। मेरी दुकान पे तो कोई आ नहीं रहा, कोरोना ऊपर से और बाकी चीजें, कोई घर से तो बाहर निकल ही नहीं रहा। तो मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, मैं अब इसकी फंक्शनलिटी बढ़ाऊं। अब मुझे ऑर्डर्स आने चाहिए, अब मुझे उनके स्टोर करने, ऑर्डर स्टोर करने, सर्व कितनों को किया एंड सो ऑन। यहाँ से ये दिखा रहा है 5 मिनट। ऐसा लगता है जैसे बरकत ही नहीं है टाइम में, अभी शुरू भी नहीं किया और ये एंड ऑल दैट। एनीवेज, तो अब वेब डेवलपमेंट का काम लग जाएगा। ठीक है। तो वेब डेवलपर का काम नहीं है कि आप वो वेबसाइट को डिजाइन करें, ठीक है ना? उसका काम है कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग की पावर से वेब डिजाइन, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट, फंक्शनैलिटी। अब वो वेब जो है ना, वो फंक्शनैलिटी करेगा। वेब डिजाइनर इज लाइक ए पेंटर आर्टिस्ट, ही इज पेंटिंग एंड ऑल। वेब डेवलपर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही वर्क्स विद कोडिंग ओनली। उसका काम दिन भर कोडिंग 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 कोडिंग। ठीक। और एक भी याद रहे, हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जो कि आजकल जैसे आपका वर्डप्रेस मशहूर है, जूमला वगैरह, ये जो है आपकी वेबसाइट बना देते हैं विदाउट विदाउट इवन कोडिंग, आपकी पूरी वेबसाइट बनाते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई मैं एक्सपर्ट बन गया, बट नो, if you want to take it as a career, you can't use content management system because that can't be tweaked as much as the likings of the customer. So we have to use our own tools. एंड वेब डेवलपमेंट, ये अभी भाग जाएगा, और मैंने ये भी नहीं किया इसका ना, अटेंडेंस भी अभी नहीं ली मैंने। One second, I should take the attendance. Okay, okay, 20 guys are here. Okay, so when say web development, then there is a front end, there is a back end, and there is database technology. We should understand that there is a front end, there is back end, and there is, so when say front end, it's a client side. It's what? It is a client side. Client, and when we say backend, it is a server side. When we say database technology, it is about the databases, what databases we have. I'll go a little faster. Now, client side scripting.
इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, ये सारा का सारा जो फ्रंट एंड क्या होता है, जो आप जो साइड पे दिख रहा है ना, जो जो भी साइड पे दिख रहा है उसकी फंक्शनैलिटी कराना, उसकी कोडिंग करना पीछे से। लेकिन ये जो चीजें होंगी, दिस विल बी रेंडर्ड इन द ब्राउजर, दिस विल बी रेंडर्ड इन द ब्राउजर वट एवर इट इज। सो मे बी यू यूज जावा स्क्रिप्ट। ओके, मशहूर है हमारा जावा स्क्रिप्ट विच इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मशहूर है हमारे पास। इसके बाद हम सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं करते हैं, फ्रेमवर्क्स करते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप हमारे पास है, बहुत सारी चीजें हम इसको डिस्कस करेंगे। मे वी टेक टुमारोज लेक्चर आल्सो ऑन इट, देन वी थर्ड डे वी गो फॉर द फोटोशॉप। ओके, हमारे पास अगर सिलेबस देखेंगे कुछ कुछ लेक्चर्स हैं, बट उससे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। वी गो फॉर लेक्चर्स एंड लेट अस लेटर सी। जो आपका लेआउट है, फॉन्ट्स है, कलर्स है, मेनूज है, कंफर्म्स, ऑल ड्रिवन बाय द फ्रंट एंड। ये सारे फ्रंट एंड करता है, लेकिन ये डिजाइनर ने बनाए। अब इसकी फहीम saying, sir, can we have some technical key differences between the design? Absolutely, there's a whole different departments। आप डेवलपमेंट का कर लो पूरा, आपको समझ आएगा इसकी, जब हम इसकी लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। तो सर्वर साइड में क्या होता है कि जहां पे आपको सर्वर है, पीछे से सर्वर है, वहां पे जो कि मेन जो आपका हब है जहां से काम हो रहा है, जो फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ यानी कि सर्वर के साथ काम करना होता है, जो आपको पता है क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर जो आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा। तो उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जैसे आप पीएचपी इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आप रूबी इस्तेमाल करते हो, रूबी ऑन रेल्स। ओके, एंड आप जावा करते हो, सी हैश करते हो, आप एएसपी कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आप करते हो इस्तेमाल, वो सर्वर साइड पे काम करते हो, किसके ऊपर, सर्वर साइड के ऊपर। तो एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, सर्वर साइड। और दूसरा हमारे पास है डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, कि हमारे पास क्या क्या डेटाबेसेस हैं और उनके ऊपर कैसे काम करेंगे, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, वो उसकी टेक्नोलॉजी है। तो एक होता है फुल स्टैक डेवलपर, क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर, जो कि फ्रंट एंड के भी ऊपर काम करता है, जो बैक एंड के ऊपर काम करता है, जिसको होल्ड होता है सारी चीज पे, that is called as a full stack developer, and inshallah I hope you all become the full stack developers. But if you go to the company, there you will be either designer or developer or UI designer and so on.